So as you can see that here I'm having all the book from Milestone. Yeah. So now let's start. So basically, is a wire coming? Yes. Wait, just a minute. Yeah. So basically, what I'll be telling in this video is how to remember the topic which we have in our chapters. So exams are approaching. It's starting from October start, as you all know. So let us start with science. So let us open chapter 1. Food, where does it come from? Sorry. So first of all, open if you want to get the notes for chapter 1, so first you have to open chapter 2, which is on page number 13. Yeah. So now, as you can see that these two pages are there. So now see, just up one page before that, one or maximum 2 pages before that, there would be a section called let's remember. It would be named as let's remember. Sorry. So in this would be the shortcut summary of the full chapter. Suppose I want to know the source of food as plant. So first of all, I have to go all the way to here. Then here's our topic, food. I don't know it's visible or not. Yeah. So here's our topic, food as plant. Then you have to see what are the foods, what kind of food are there from plants. So simply you can just come here, source of food, plant, root, stem, leaf, every kind, with 2 examples of it. Animals same. Then comes feeding habits of animal, different kinds of animals. That's it. It's the easiest way to learn. Now I have a keynote for you all, that not every chapter's summary would be same. Not every chapter will have the same way of remembering concepts. So yeah, I know that wire is coming. So now let us do it with this. 1 minute. Yeah. So chapter 1, knowing our numbers. So page number 27, right? Why every problem is happening in this video only? 27. So 27, not actually the same, right? So now what you can do is, suppose I want to know what is estimation. So simply you can see here, wait, yeah, over here this side it is showing the definition of the particular word. Suppose I want to know what is you can say body mass. So I came over here, then you can see here, remember to solve the operation inside the brackets first and then carry out the operation outside the bracket. So this is the full form of body mass. Very simple. Expanding brackets and use of bracket, everything. And also, yeah, one more easy way is, I'm telling you, I'm extremely sorry, there would be a recapitulation flow chart like this of every chapter, in which the topic which we have covered or the book has covered will explain this. Use of bracket, expanding bracket. As you can see, let me open the first page, then I'll tell you. Yeah, so see, and one more keynote, that simple topics won't have this. See, before this
let's try one. Everything is, like you can say, everything is the recap of what we learned in previous classes. Now here comes the place value and face value. Simply it would be something like this, or you can see something like this, which would explain everything. Like this you can see. I think you understand what I meant. Now for Hindi and English it is completely different. Sorry, ये हिंदी में ही बोल देता हूँ, इंग्लिश वाले लोग देख रहे होंगे तो उनको वैसे भी समझ नहीं आएगा, तो हिंदी में कंटिन्यू करते हैं. तो इसमें ना पूरी तरह से सब डिफरेंट है. यहाँ पे साइड में ये होगा येलो बॉक्स में, हिंदी की अभी बात कर रहा हूँ. येलो बॉक्स में ये जो है ना, ये वो होगा कि उस पर्टिकुलर पेज में या फिर एक सेलेक्टेड जगह होगी, वहाँ पे जो भी लिखा है उसको पूरी तरह से समझा रहा है. जैसे पोयम है तो इसमें बता रहे यहाँ कवि ने हिंदी भाषा के सौंदर्य को प्रकट किया है कि किसी बात को संकेतों में कैसे कहा जा सकता है. तो पहले दो लाइन का ये है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. तो पहले जो दो लाइन है ना, उसका यहाँ तक है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. अब आते हैं मेन चीज़ पे. हिंदी और इंग्लिश में एक चीज़ और है कि इसमें और भी चीज़ें रहती है स्टोरीज के बाद भी. जैसे इसमें उपसर्ग प्रत्यय, तो देखो ये यहाँ पे आएगा, बोर्ड में लिखा होगा, मूल शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश के ऊपर को मूल शब्द के आगे आने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं. तो ये होगा उपसर्ग का. फिर आगे प्रत्यय पे मूल शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं. बोर्ड में लिखा होगा या फिर ऐसे, ये जो बॉक्स बना है ना, ऐसे में होगा बोर्ड में, या फिर डिफरेंट कलर में लिखा होगा. आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट. समझ रहे होगे. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, history. History. Same as math and science. Let's remember section. Nothing much to tell, so I just skipped it. Sorry, my book is not in a proper condition because this is of someone else. In English there is no let's remember. Please make a point that in English there is no let's remember. What you can do is, suppose there is building block parts of a sentence, subject and predicate. So there would be a full sentence like this. Let me wait. I think it's visible, right? Like if it is, let's aim for 10 like. So a sentence is a group of words that make some complete sense. Every sentence has two parts, a subject and a predicate. Read the following. So first you have to read the full paragraph, then you will get something like this. The subject names the person, place, animal or thing about the sentence. It tells us what or who the sentence is about. In the sentence given below, the parts highlighted in green are subject and
of the sentence. So now same as here, let me just open something random. Yeah, over here, this we haven't covered. Okay, it's a poem, Prince of Persia. It just came in my mind. I think something happened, it was stopped accidentally, so now continuing. Resetize. A new word. Resetize. Lol. Blooper. So yeah, so building block adverb. Let me just remove one of them, two of them, not more, because it would be too small. Adverb of manner. Such adverb tell us how or which manner is done. They usually end with suffix "ly". Such adverb answer the question how. Means if you understand it right, like if you enjoyed the video, and if you had any doubt related to the video, please comment below. I will definitely answer that. So at last I would tell you something really important. 1 minute, please ignore this. What should I take? So you guys must be thinking, I think some of you must be thinking that why I'm not uploading the videos frequently as I was doing it before. So the reason is exams. ASMR. Exams. Okay, no more blooper. So exams, एग्ज़ाम्स सर पे अक्टूबर के स्टार्टिंग से ही एग्ज़ाम्स हैं. मैक्सिमम सभी लोग को होगा, हम लोग के स्कूल में तो है ही है, दूसरों के भी में भी ऑलमोस्ट इसी पीरियड के आसपास होगा. तो मेरा वर्क कंप्लीट है पर स्टिल मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रहा. तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम टाइम प्रिपेयर मैं करूँ, इसलिए मैं वीडियोस पर नहीं कर पाता. तो अब से मैं फिक्स टाइम ये कर रहा हूँ कि 1 minute. Something is changed, right? Never mind. Yeah. So I'm fixing a time, as I said, is so if I would upload some gameplays, it would be on Sundays between 8. पेन भी अभी ख़राब होना था, रुको दूसरी पेन ले आता हूँ. दूसरी नहीं मिली तो यही रखी थी, थोड़ी टूटी है, नेवर माइंड. तो संडे को 8 बजे से 9 बजे के बीच में रात के वीडियो आएगी. क्या लिख रहा हूँ? गेम प्लेस की. और ये जैसे ये वाला वीडियो है पढ़ाई का, वो होगा हफ्ते में. मैं ट्राई करूँगा मिनिमम 2 वीडियो तो ले ही आऊँ, नहीं तो वेडनेसडे. और यदि दूसरा कोई वीडियो ले आया तो वो होगा सैटरडे. और हाँ, यदि मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम फ्री रहा ना तो मंडे भी. मतलब ये फिक्स है कि हफ्ते में एटलीस्ट 1 वीडियो तो आएगी. वेंसडे वाला तो फिक्स है. वेंसडे की सैटरडे या मंडे इन वेंसडे, हाँ वेंसडे तो फिक्स है. तो दिख रहा है ना? हाँ, गेम प्ले
is equals to Sunday study is equal to Wednesday. I know स्पेलिंग सही नहीं है, कमेंट में ना लिखना, स्लैश वीकडे। और मेरे वीकडे में ना सैटरडे भी आता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अभी एक कुछ और भी बता ही देता हूँ जो मैं बहुत दिन से सोच रहा था बताऊँ। क्या बताना, हाँ बता रहा हूँ। तो इस समय मैंने माइक फंसाया नहीं है, हाथ में ही दिया हुआ हूँ। तो इम्पोर्टेंट ये है ना, ये मैंने देखा है कि जितने भी लोग वीडियो देखते हैं ना, उनमें से 80% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। वो स्पेशल मेरे फेवरेट 20% लोग हैं जो सब्सक्राइब किए और मेरे वीडियो देखते हैं। थैंक यू उनके लिए। और जो नहीं किए हैं प्लीज़ भाई कर दो, एक बटन ही तो दबाना रहता है, क्या फ़र्क पड़ता है। And yes, people who still watching in English, I would request them to please subscribe my channel. It's just like pressing a button. Like you can say, it's as simple as it's. क्या example दूँ? Just open your copy and write in. Please subscribe. And I'll meet you in the next video. Bye. 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 Bye.